Hello, parents and my dear students. Welcome to Aradat School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 5. Subject English. Chapter 10. Lecture number 1. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be opened, then you may clear to related teacher. इस लेक्चर के दौरान अगर आपको कोई डाउट है तो डाउट आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। जब भी आपके स्कूल्स रीओपन होंगे तो वो डाउट आप अपने रिलेटेड टीचर से क्लियर कर लीजिएगा। नाउ स्टूडेंट्स, टेक आउट योर बुक एंड टर्न टू पेज नंबर 178. Okay, so here is chapter number 10. We have to start a new chapter today in this lecture. So that is titled Say No to Tobacco. इस चैप्टर का टाइटल है से नो टू टोबैको। से कहना, नो नहीं, टू को टोबैको तंबाकू। सो स्टूडेंट्स, यहाँ कहा गया है कि आपको तंबाकू को मना करना है, तंबाकू को नहीं कहना है। सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। सो अ क्लासरूम is looking almost empty. So here in the first sentence, it is stated that a classroom is looking very much empty. एक क्लासरूम कक्षा कक्ष is है, looking दिख रहा, almost लगभग, empty खाली। So यहाँ कहा गया है कि एक क्लासरूम पूरी तरह से खाली दिख रहा है। The teacher enters. So here suddenly the teacher enters into the classroom. The teacher शिक्षक enters प्रवेश लेते हैं। Teacher, good morning children, how are you? So the teacher greets the students and asks them how they are. Good morning, सुप्रभात। Children, बच्चों, how कैसे, are हो, you तुम। So यहाँ पर टीचर बच्चों को ग्रीट करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप सब कैसे हो। How are you all? Good morning ma'am, we are all fine ma'am. So in the next conversation, the students reply in one voice, that is good morning ma'am and we all are fine. All good morning, सुप्रभात मैम, we are हम हैं, all सारे, fine ठीक मैम, full stop, thank you धन्यवाद, how are you how कैसे, are हो, you तुम। So students मैम का धन्यवाद करते हैं और उनसे पूछते हैं कि मैम आप कैसे हो। हम तो सब ठीक हैं। Teacher, I am fine too my dear students. So in reply the teacher says she is also fine. I am मैं हूँ, fine ठीक, too भी, my dear मेरे प्रिय students छात्रों। So teacher कहते हैं कि मैं भी ठीक हूँ मेरे प्रिय छात्रों। Thank you धन्यवाद। Why are there so few students in the class today? So here teacher asks another question, that why are there so few students in the class today? Why क्यों, are है, there वहाँ, so few बहुत कम, students छात्र, in the class कक्षा में, today आज। So teacher एक क्वेश्चन पूछता है स्टूडेंट से कि आज क्लास में इतने कम बच्चे क्यों हैं, इतने कम स्टूडेंट्स क्यों हैं। So what does Kavita replies? Let us read. Ma'am, Rinku's father has died today. So here Kavita replies that the student named Rinku and her father has died today. Ma'am, अध्यापिका, रिंकू के father पिता has died मर चुके हैं today आज। So
कविता कहती है टीचर से कि मैम रिंकू के पिताजी की आज मृत्यु हो चुकी है, वो आज मर चुके हैं. So all the children of that colony have not come. So she adds that that's why all the students of that colony haven't come today. So इसलिए all सारे the children बच्चे of that colony उस कॉलोनी के उस नगर के have not come नहीं आए हैं. So कविता कहती है इसीलिए मैम रिंकू के फादर की आज डेथ हो चुकी है, मौत हो चुकी है, इसलिए उस कॉलोनी के कोई भी स्टूडेंट्स आज स्कूल नहीं आए हैं. टीचर, हे भगवान, what happened to him? Now teacher exclaiming like हे भगवान और oh my god, what happened to him? हे भगवान, what क्या happened हुआ to him उन्हें. So यहाँ टीचर पूछते हैं कविता से कि क्या हुआ उन्हें. Now it's Kavita's turn. He died of oral cancer. Now Kavita says that he died of oral cancer. She expresses the reason of his death. He वह died मरे of oral मुंह के कैंसर के कारण. So कविता कहती है कि उन्हें मुंह का कैंसर हो गया था. ओरल मीन्स स्टूडेंट्स, ओरल का मतलब होता है जो माउथ से रिलेटेड हो. कैंसर एक डिजीज है, एक बीमारी है. नेक्स्ट टीचर, हाउ ओल्ड वाज ही? हाउ ओल्ड वाज ही? नाउ टीचर वाज आस्किंग हिज एज टू कविता. हाउ कितने, ओल्ड एज में थे वो, वाज ही. सो टीचर यहाँ पूछते हैं कि उनकी एज क्या थी. कविता, he was 35. Now here Kavita says he was 35 means 35 years old. So he वह was थे 35. 35 का मतलब होता है स्टूडेंट 35 साल के थे. उनकी एज 35 years थी. रिंकू के फादर की एज क्या थी? 35 years. So students, we are done with the chapter part of today's lecture. So let us come to the homework part. Note down your homework for today. That is some hard words. Okay. Class 5, subject English, chapter 10, lecture number 1. Homework. There are some hard words from today's lecture we have read. First is almost. Almost का मतलब होता है students लगभग. Second one is colony. Colony का मतलब होता है जहाँ सबके घर आसपास हो. That is residential area. जहाँ लोग रहते हो. That is called colony. Third one is oral. Oral means related to mouth. मुंह से related जो होता है, that is called oral. Fourth one is cancer. Cancer एक बीमारी है, बीमारी का नाम है. Okay students, so you have to learn and write these hard words in your notebook in neat and clean handwriting. Send your daily homework before 9 o'clock every day in good handwriting on this WhatsApp number 7568077458. Note, डेली 9 बजे से पहले आपको अपना होमवर्क रफ नोटबुक में अच्छी हैंडराइटिंग में करके स्कूल के व्हाट्सएप नंबर 7568077458 पर भेज देना है. I hope you like the video students. Thank you for watching.